Hi, myself, I'm R.Bhushan. Welcome to the program, welcome to ASG Biology. ASG Biology. This program is very, very useful for NEET, AIIMS, and JIPMER. This biology sections is very, very useful for all the persons who is giving a medical exam, NEET, AIIMS, JIPMER, and foundations. There are 38 chapters in NEET examination, और आप लोग सभी लोग को पता है कि 360 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स के 360 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. And if you are hearing my videos and attending my lectures, 100% you are going to score 300 plus. और जो भी स्टूडेंट 300 प्लस एग्ज़ाम में लाता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ गुड कॉलेज. तो नीट के इस एग्ज़ाम में मैं आपको एक एक करके, दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन, और इस सेक्शन में मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ द लिविंग वर्ल्ड से, द लिविंग वर्ल्ड, and one by one I will give you a lot of information. So please dear, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए. द लिविंग वर्ल्ड में मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, लिविंग बींग्स के बारे में बताऊंगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में बताऊंगा. तो लिविंग वर्ल्ड, पहले तो Biology is all about life and organism. It is about plants, animals, and microorganisms and human beings. Biology has a wider scope than wider scope, and you can say that it is a one umbrella where all the things we are going to discuss. It comprises a study area that focus on life at variety of levels and from a diversity of perspective. Biology can be defined as the science of living matter in all its forms, including the processes involved with respect to its origin, growth, reproduction, structure, and behavior. So one more thing is there. The earth has a wide variety of ecological habitats which can be broadly categorized into aquatic and terrestrial habits. Aquatic habitats are exemplified by the ocean, seas, rivers. Some flow into sea, ponds, natural and artificial lakes, estuaries, sulfur springs, etc. Each habitat has characteristic life forms. The terrestrial system comprises the rainforest, deserts, semi-arid and humid rainforest and polar habitats. The population of community can thrive successfully in them because of unique structure, function and reproductive strategy which adopt them to such an ecosystem. आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा इकोसिस्टम भी क्या होता है. Organisms in an ecological system have a different form, sizes and linkage with each other and also with a vastly different form. My dear students, while hearing my videos and while hearing my lectures, it's very important that you should note it, the important facts, because that is very, very important. If you are going to note it, definitely it is going to be benefited. Another is I am going to tell you in 1835, the protoplasm was discovered by Protoplasm was discovered by Dorjin. The simplest form of the life is exhibited by submicroscope, that is DNA and RNA. Till today, around 160,000 species of organisms have been discovered, described and categorized. At least 1 million of these are the insect. It is generally believed that possibly 25 million species of insect may occur in our biosphere, occupying diverse ecological habitats ranging from polar region to sulfur spring. Another is what is living beings. So I am going to discuss you about the characteristic of the living beings. Living beings exhibit a variety of traits. Characteristic are specific features which differentiate them from the inanimate world. The only similarity are that they are made of carbon, hydrogen, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो देखो 4 एलिमेंट को ध्यान रखना है. जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनमें 4 एलिमेंट तो मिलेगा ही. एक तो कार्बन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन. फेस सिमिलर. चैलेंजेस ऑफ द ग्रेविटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एट्सेट्रा. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बींग्स आर एज फॉलो. जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ग्रोथ के बारे में बताऊंगा, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, लोकोमोशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, इरिटेबिलिटी है, सेंसेंस एंड डेथ है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंड होम्योस्टेसिस है, एडॉप्टेशन है, हीलिंग एंड रिपेयर है, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, एवोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन
एंड इंटीग्रेशन। तो एक एक करके मैं बताऊंगा कि ग्रोथ क्या होता है, उसके बाद मैं एक एक करके आऊँगा। ग्रोथ it is not a defining property of living organism but is a characteristic and depends upon the various factor. This is because of the growth non-living object occurs by material accumulation or accretion. एक्रीशन का मतलब क्या होता है? ACCRETION। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो जरूर लिख लीजिएगा। एक्रीशन का मतलब होता है ग्रोथ आर इंक्रीज्ड बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, growth are increased by gradual accumulation by additional layers or matter. The growth of living organism is reflected by two characteristics. Number one is increase in number of individuals and second is increase in masses. Increase in the number of individuals, there are various forms of cell division to achieve. Some microscopic forms increase in number as accomplished in a host cells which provides precursor to them to their application. Microorganisms also grow by cell division. And second, increase in mass. Concomitant जिसका मतलब होता है नेचुरली एसोसिएट। Concomitant growth of body leads to the attainment of specific shape, size, mass, appendages, etc. The increase in mass of organism is also indicative of its growth. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसमें हम बताएंगे रिप्रोडक्शन के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।